हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइल्स की टीवी। तो आज मैं आपके लिए मई टू अगस्त का नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ न्यू स्टोर और शॉप दैट हैज रिसेंटली ओपन इन योर टाउन और अ सिटी। एंड योर क्यूज आर वेयर इज इट, व्हाट इज सोल्ड हियर देयर सॉरी, एंड हु गोज देयर। यदि कोई टाउन के बारे में बताना है, आप जहाँ पे नई शॉप ओपन की हो, ठीक है, जहाँ हुई हो, ओके, तो वहाँ पे क्या बेचा जाता है और क्या सोल्ड किया जाता है और आप क्यों जाते हो वहाँ पे, एंड कौन कौन जाता है वहाँ पे। ओके, आइडिया बेसिकली आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो गिफ्ट शॉप के ऊपर बना लो, चाहे आप वो कोई भी शॉप बता सकते हो, कोई कैंडी शॉप हो सकती है, सोडा शॉप हो सकती है, कोई बेकरी के बारे में भी बता सकते हो। कोई भी आप एक्सप्लेन करना चाहो वो कंटेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स देखते हैं कि मैंने क्या आइडिया लिया है। ओके okay, it is a good thing that several new shops have recently opened on the streets where I live, and because of this I do not really have to travel far as I used to in the past to take care of many of my household needs. Today I would like to talk about one such shop which I like to visit from time to time. This particular shop is a stationery store that sells office supplies, paper, pens, greeting cards, letter writing material, and other paper based products. But I do not normally visit this shop to buy a large volume of stationery products and items, as I go to bigger stores to buy them so that I can save some money. But whenever I need pen, a few greeting card or similar product, I visit that shop. बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है वो आप इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिख सकते हो। नेक्स्ट कंटेंट आप चेंज कर सकते हो आप अगर आपने कोई और की शॉप को एक्सप्लेन करना है। ओके, located right across to the street where I live, this isn't exactly a big shop, nor does it have any additional staff to help its customer. But even though it is a small shop, it is nicely organized and decorated with essential items. The shop is about 180 square feet and has several shelves on the top of each other around the store in order to stock the product. By the way, even though it is mainly a stationery shop store, as far as I know, few people visit it to buy its stationery product. Rather, most people visit this store either to buy the airtime for the mobile phones or the send or receive money electronically. Sometimes people visit the store also to buy SIM card, okay, or to buy phone chargers. It is a fairly busy store and the owners can be seldom standing idly and doing nothing. Anyway, I visit this particular shop mainly to recharge for my mobile phone and send money. I like to visit this store because from time to time to buy a few stationery items and because I have a great personal relationship with the owner of the shop also. तो ये मेरा आइडिया था। इसके अलावा अगर पास और कोई आइडिया हो तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते तो थोड़ा का भी इसको भी एक्सटेंड करना चाहे तो वो भी आप बता सकते हो। मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था, उसके लिए मैंने सामान यहाँ से ख़रीदा था, मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, कोई भी आइडिया एक्सप्लेन और कर सकते हो। फॉर मोर अपडेटेड द आइल्स एंड सेंटली आस्क क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।